जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम में जिसका नाम है सेल्फ रियलाइजेशन विद साध्वी भगवती सरस्वती जी, और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज इस एपिसोड में हम एक ऐसी चीज को कम करने के बारे में बात करेंगे जिससे आज के वक्त में हर कोई परेशान है, बच्चा भी, जवान भी और बुजुर्ग भी, और वो है स्ट्रेस। अननेसेसरी, अनवांटेडली पता नहीं कहाँ से आ जाता है स्ट्रेस। आइए उसको कम करने के तरीकों पे हम यहाँ बात करें। हम यहाँ पर बात करें कि आखिर ये होता क्यों है, हम क्यों बेवजह इसको पाल लेते हैं। पूरी जानकारी देंगे साध्वी भगवती सरस्वती जी। जय गंगे साध्वी जी। जय गंगे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अच्छा, पहले तो मैं ये बात ज़रूर समझना चाहूँगी, जिसको हम स्ट्रेस का नाम देते हैं, जो स्ट्रेस है, जो आ जाता है, अननेसेसरी आ जाता है, किसी भी बात से आ जाता है, वो एक्चुअल में उसकी परिभाषा क्या है? अगर हम उसको समझने की थोड़ी कोशिश करें, वो आता क्यों है? अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ, इसका मतलब है कि मेरी प्लेट के ऊपर इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, that I am of value, I am important. So we now wear stress like this badge of honor. If you are not stressed, लोगों को लगता है अरे कोई काम तो नहीं है उसका क्या? As though somehow we are not fulfilling our potential. And this is absolutely ulta. Stress is very common, yes. It is what we would call ubiquitous, meaning it is everywhere. But iska matlab nahi hai that it is natural, that it is good, or that it is okay. Stress is actually an illness. It is horrible for our bodies. It's horrible for our minds. देखो ये stress response जो है, अगर हम इसको neurologically और physiologically देखते हैं, जब stressed feel करते हैं हम लोग शरीर में, what do we feel? Right? Our stomachs become very tight and tense, है ना? Heart rate starts to go up a lot. वो hands become gila, they're sweating, पसीना आने लगता है. We become red in the face. This is what we call the sympathetic nervous system response. It's what we call colloquially fight or flight nervous system response. Now, it is a beautiful system. भगवान ने हमको इतना सुंदर से बनाया कि अगर हम लोग, जैसे if you look at our ancestors, और हम कोई village में थे और दूर से एक wild हाथी आने लगे या tiger आने लगे या adjacent वाले villagers आने लगे उनकी bows and arrows को लेके हमको मारने के लिए, तो what happens in the body is सारे जो शरीर का जो ओजस, जो शक्ति that we use in digestion, that we use in our reproductive systems, that we use in our internal organs, Sari Shakti gets pulled out of our organs into our hands and our legs. Digestion stops, reproductive work stops, all of our functioning of our organs, the internal glands, it all stops, other than that which is happening in the adrenal glands, giving us these chemicals that we call adrenaline. Cortisol. When those chemicals flood our bodies, it takes all of that internal energy, sends it to our hands and legs, ताकि we can लड़ाई करे या भागो. दो ऑप्शन है, कोई वाइल्ड हाथी आ रहे हैं, कोई टाइगर आ रहे हैं, कोई neighboring tribe आ रहे हैं. You only have two options. You fight them or you run away. अगर बचना है तो either you fight or you flee. दोनों situations में our hands and our legs must be very good and strong.
So that's why all of the energy, all of the blood from our body goes from the inside to the outside. इसलिए our face becomes red, इसलिए our hands start to sweat, क्योंकि सारे जो शक्ति, जो ओजस now is in my extremities, in our skin. The skin becomes red because the blood is there, becomes sweaty, and our heart rate goes up, meaning it is giving the body more blood. The faster our heart beats, the more blood is being pushed from the heart into the body. ताकि मैं लड़ाई करूं या मैं भाग जाऊं. Okay. When your heart rate is slow, आप ध्यान कर रहे हैं या आप सो रहे हैं या आप बहुत शांति से बैठ रहे हैं, you are not going to be able to fight very well or to run very well. So that is why we have this beautiful stress response. Problem is, it was designed to work for 30 minutes, 1 घंटे, 1.5 घंटे, and then we go back to normal. Digestion starts again, reproduction starts again. लेकिन आजकल हमारे stress response जो है is not only for things that are physically threatening. These days, if you ask people what they're stressed about, it's not कि oh रोज कोई wild हाथी आते हैं, I'm very worried I'm going to be killed, या मेरे गार्ड में tigers आते हैं. It's things like, this man took my parking space, now I don't have a parking space. Or this person in my company is very not nice, मैं उसके साथ काम करना नहीं अच्छा लगता, मज़ा नहीं आता है उसके साथ. All of these things are my mother-in-law, my daughter-in-law, ऐसे है वैसे है. My husband is like this, my wife is like that, my children are like this. एग्ज़ाम है उसका कल, स्टडी नहीं कर रहे हैं, मैं करूँ क्या, मेरे को समझ नहीं आता है, या अपनी सब्जी नहीं खाते हैं. Right? We are stressed about all of these things. And the dilemma is we are stressed all the time. So that which is meant to happen only for 30 minutes, an hour, 2 hours, is running all the time. इसलिए हमारे digestion खराब हो गया, सभी constipated है, digestion होती नहीं है जब तक पूरा सुबह चाय नहीं पिया, होते नहीं है पेट साफ. Why? Because our digestion has gotten messed up. Reproductive systems have gotten messed up. इतनी लोग आजकल pregnant होने की कोशिश करते ही नहीं हो रहा है. Our reproductive systems are messed up. So much is going wrong internally. Because our bodies are running on stress. Everybody's got high blood pressure, high cholesterol, diabetes. All of these things are from the stress in our body. These chemicals are very good for a short period of time. Long term, they are poison. So that is what is happening with stress in our system. And इसलिए we need to stress को दूर करना है. लेकिन जब ऐसी चीज़ें अपने आसपास हो जाती हैं, लोग कर देते हैं, या हमारे साथ में जो लोग हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी हम परेशान होने लगते हैं, तब उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें? ना चाहते हुए भी हम परेशान हो गया. तो ये कैसे हो गया? अगर मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं परेशान हो जाऊँ, तो who is making me परेशान? I. हाँ. Oh. मान लीजिएगा बारिश हो रही है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं गीला हो जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं बाहर जाके खड़े हो जाऊँ. गीला तो होगी, मेरे ऊपर नहीं है, वो बारिश के ऊपर है. बारिश मेरे को गीला करा रहे हैं. The rain is making me wet. मेरे उसमें कोई कंट्रोल नहीं है अगर मैं बाहर जाके बिना अम्ब्रेला खड़े हो जाऊंगी. चाहते हुए ना चाहते हुए मैं गीला तो हो जाऊंगी. I will become wet. लेकिन जो भीतर की स्थिति, वो तो बाहर की स्थिति. I am wet, my skin is wet, my clothes are wet. भीतर की स्थिति जो है वो मेरे ऊपर है. कोई भी
ना कोई मौसम, ना कोई व्यक्ति has the power to make me परेशान. I make myself परेशान. ये महा illusion है. आपने मुझको miserable बनाया. You made me miserable. You made me angry. You made me stressed. No. किसी का ऐसे power है नहीं. People are just doing their thing. Speaking what they speak. Acting how they act. उसकी reaction मेरे ऊपर है. वो तो जो करेंगे उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. How other people act. But I have control over how I react. Right. Parishan, I have made myself parishan. Why? Because I want something different from what is happening. Stress इसलिए है. जो मैं चाहती हूँ नहीं हो रहा है. जो मैं नहीं चाहती हूँ वही हो रहा है. वो स्ट्रेस का मूल है. तो इसकी कॉज क्या है? इच्छाएं. मैं इसलिए स्ट्रेस्ड हूँ क्योंकि जो मैं चाहती हूँ नहीं हो रहा है. जो मैं नहीं चाहती हूँ हो रहा है. मेरी जो इच्छाएं हैं they are not being fulfilled. इसलिए मैं स्ट्रेस्ड हो गया. तो प्रॉब्लम क्या है? इच्छाएं. आप रियलाइज करो कि इच्छाएं आपका मन में है, लेकिन इच्छाएं को पूर्ण करने के लिए किसी और के हाथ में है. बिल्कुल. And as long as I realize that, okay, I don't have any control over it. What I do have control over is how I react when मेरी इच्छाएं are not fulfilled. ठीक है, have a desire, no problem. It happens, wonderful. It doesn't happen. Now you have control over your reaction. That is in my hands. Do you want to lose your peace just because someone did something stupid? Just because someone was rude? Just because someone was arrogant or insensitive? Really? अपनी शांति को खोड़ा दान में डालने के लिए तैयार हो? उनकी बेवकूफ़ी की वजह से? Of course not. So, in order to stop being stressed, number one, I have to realize it is not normal. It is a disease. उसकी disease के इलाज जो है, treatment is in my hands. Most of us think कि when other people start doing what I want, then I will stop being stressed. जरा उसको समझाओ. मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है कि जब हम छोटे थे ना, हमारे साथ ही होता था. जब मुझे लगता है कि आई वॉज इन 3rd या 4th स्टैंडर्ड, कि जब हमारे बर्थडे होते थे सेलिब्रेट, तो हमें लगता था वो आना चाहिए, वो अच्छा. और बच्चों को शौक होता है ना, गिफ्ट्स आएंगे बहुत. तो जब उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं मिलती थी या सारे फ्रेंड्स नहीं आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लगता था कि यार जो आ रहे हैं ना, नहीं, उनको भी आना चाहिए था, तभी पूरी खुशी हमें मिलेगी. दूसरी बात, शादियों का सीज़न होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं वो रिश्तेदार भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन जब कुछ लोग नहीं आते हैं ना, तो हम जो आ रहे हैं उनके बारे में परेशान नहीं होते, जो नहीं आ रहे होते हैं उनके बारे में सोच के 1 साल तक परेशान होते हैं. ये ह्यूमन नेचर का दुर्भाग्य जो है अपने हाथ में, हम उसको ध्यान नहीं देते. जो हाथ में नहीं है उसको पूरा ध्यान देते हैं. बिल्कुल सही बात. इसलिए there is a beautiful practice. मैं खुद रोज उसी प्रैक्टिस करती हूँ. A gratitude practice. सुबह उठ के बिस्तर से उठने से पहले I think of at least 5 things I am grateful for. उसी दिन. Which ones? Varies from day to day, but it can even be very simple things like, do your eyes open? Can you see?
Do your legs work? Can you actually walk from your bed to the bathroom? क्या आपका नल से जल आते हैं? आपका घर में कोई ऐसा नल हो जिससे जल आते हैं? क्या आपकी फ्रिज में खाना है? क्या आपकी लाइफ में, चाहे बिस्तर में है अपनी, चाहे अपने घर में है, चाहे कहीं और है, लेकिन आपकी लाइफ में है, कोई है who you love and who loves you? If you have all of just those things, you are luckier than most people in the world. फिर उसके अलावा so much to be grateful for. I'm so grateful every morning कि the sun is about to rise. I'm so grateful कि मुझको इतना सुंदर जगह रहने का अवसर मिला. I mean, there's so much to be grateful for. So you begin the day with gratitude. And what that does is it sets the whole tone of the day, that rather than focusing on जो नहीं आए या जो नहीं मिला, I focus on जो आए, जो सामने है, जो मिला. Because I'm already tuned for that day toward gratitude. So that's a very good practice to help with this kind of problem. But what we really have to also do with stress is ask ourselves, is everything a matter of life and death? This parking spot? This person, how they treat me or talk to me? This comment on social media? This raise, this promotion? This store that was out of my favorite brand of cereal? जो भी है, जो दिन में होता है, जो help आज नहीं आ पाए, these sorts of things that take our peace. Ask yourself, क्या ये really life and death situation है? क्योंकि stress response life or death situation के लिए है, convenience के लिए नहीं है. जब हम अपनी inconvenience से पूरी stress response शुरू करते हैं, when we put that kind of importance, life and death importance on everything, then naturally we get stressed. But क्या है? It's not sharir life and death. It's ego life and death. Just like the physical body is threatened by the hathi, by the tiger, by the warring tribes, our ego is threatened by what this person is saying, what that person is doing, how things are going my way. तो अब पूरा stress response जो है has started happening for our ego, not only our life and our body. इसलिए हमको अपनी ego को थोड़ा सा शांत कराना है. We need to bring our ego down, take a lot of deep breaths and ask ourselves, is it really worth it? Is this thing I think I am so stressed about, is it worth losing my health, losing my peace? क्या ये सचमुच life or death situation है? Ask yourself always, ठीक है, what's the worst that happens? ठीक है, this person is rude. ठीक है, जो मैं चाहती थी नहीं हुआ. ठीक है. मतलब शुरुआत आपको खुद से ही करनी पड़ेगी. शुरुआत or middle or end. Beginning, middle, end हमारे ऊपर है. We have the power. एक मंत्र मैं आपको आज दूं. Choose peace. Very simple. Choose peace. Or you could say, I choose peace. क्या बात है. Every moment I have the power. आप जो भी करना ही करो. I have the power. बस हमें समझने की बात है, क्योंकि हम ही खुद को बदल सकते हैं आज, कल और हमेशा. तो इसलिए कल बदलें, क्योंकि कहते हैं ना, आज करे सो अभी कर. और बहुत जल्दी, जितना जल्दी हम चीज़ों को कर लेंगे उतना जल्दी चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी. तो चलिए, आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं. आप बस चूज़ कीजिए पीस को, शांति को, शांति को. आज के लिए सिर्फ इतना ही. साध्वी जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए एक बार फिर.
जय गंगे, जय गंगे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।